फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्यूबिकल टॉक्स विद अविक। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज आई एम मेकिंग दिस वीडियो आउट ऑफ पब्लिक डिमांड. आई हैव बीन रिसीविंग न्यूमरस कमेंट्स, एटलीस्ट 14-15 messages I've received on my Instagram handle and YouTube comments as well, that what are the signals that I should know before my company lays me off. So, what are the 7 signals or indicators which will help you to understand that your company is planning to lay off people, irrespective of you, your colleagues, but you will overall get an idea that yes, कंपनी भाई ले ऑफ की तरह जा रहा है. तो क्या क्या सिग्नल्स है, मैं उसके ऊपर हम लोग छोटा सा वीडियो चर्चा करेंगे. इसके ऊपर 7 पॉइंट होगा, बहुत सिंपल पॉइंट होगा, बहुत रियलिस्टिक पॉइंट है. And before I proceed to the video, please, I would like to thank you for your immense support that you're giving on my Instagram handle, on my YouTube channel, by giving your valuable comments and inputs. And this is giving me immense motivation to make more videos out of this. So let's start with the video. What are the 7 signals? Number 1 signal, very important signal. Suddenly you will see a hiring freeze. Hiring freeze matlab, the company will stop hiring any new employees. Okay, there will be a certain freeze in terms of the hiring. You will see there is that the interview gets cancelled, and totally the interview thing gets freezed and locked altogether. That means the company is not planning to take any more headcounts. So that's a first and foremost signal that you will notice, because एज एन एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू, अगर कोई कंपनी प्लान कर रहा है ले ऑफ करने के लिए, दे विल नॉट हायर पीपल. लीगली दे कैन नॉट हायर पीपल बिकॉज दे आर लेइंग ऑफ पीपल. सो दैट्स द थिंग. नंबर 2 पॉइंट, सडनली यू विल सी देयर आर न्यूमरस परफॉर्मेंस केसेस इन द टीम. पहले क्या होता था, थोड़ा मतलब छोटा मोटा गलती के लिए कंपनी बोलता था ठीक है यार, अभी आगे से नहीं होना चाहिए. बट now you will see your manager or your leader is documenting all your errors and planning to put those errors, in terms of making and in terms of putting you in the performance improvement plan. So by this way, the company is avoiding the headcount which will be released through layoff by putting employees on a performance issue, so that the company can justify that, hence, since they were not performing to the standard, hence we are terminating them. So that's the thing. Number 3, suddenly you will see a sense of cost cutting in the team. छोटा सा चीज़ RNR नहीं होगा, रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन का फंक्शन नहीं होगा, बिकॉज दे ऑब्वियसली दे डोंट वांट टू spend money on those things. Number 2, अगर आपका ऑफिस का कैब्स होता है, अगर बहुत सारे ऑफिस में ऐसा होता है कि दे प्रोवाइड इंडिविजुअल कैब और टू एम्प्लॉयज पर कैब. सडनली यू विल सी द मेंबर्स इन द कैब गेट्स इंक्रीज. मतलब 2 से 3 हो गया, 3 से 4 हो गया, 4 से 5 हो गया. So by this manner, the company is planning to cut the cost, the transportation cost. Number 3, if you are getting any shift allowances or any kind of overtime allowances, the company will suddenly stop that. Okay, there will be no team parties, because company will say कि भाई मेरे पास budget नहीं है for the team parties. If you want to do a team party, please Dutch, and then we can go for the team parties, irrespective of the designation and the number of people. Okay, पहले क्या होता था, यही कंपनी टीम पार्टीज में ले जाया करता था, बट अभी ये टोटली बंद हो चुका है. सो दिस इज अनदर साइन दैट द कंपनी इज मेजरली कंट्रीब्यूटिंग इन टर्म्स ऑफ द कॉस्ट कटिंग इनिशिएटिव. नंबर 4 पॉइंट, इसके ऊपर कोई ज़्यादा डिस्कस करता नहीं है. द कंपनी विल आस्क यू टू गो ऑन अ हाइब्रिड मोड और वर्क फ्रॉम होम मोड. By making making employees work from home, they are cutting the cost in terms of the facility cost, the transportation cost, the electricity cost, and by this manner you will sense that overall the company is planning to reduce the cost.
This is another factor which indicates that the company is going towards laying off people. Okay. Number 5 point, suddenly you will see that काम बहुत कम हो गया आपके पास और आपके टीम के पास काम आ ही नहीं रहा है, बहुत कम आ रहा है. एंड इफ़ यू आस्क योर मैनेजर और ये लीडर की कैसे हो गया, तो दे विल नॉट हैव एनी आंसर. दे विल से दैट मे बी काम जितना ज़्यादा नहीं है उसलिए नहीं आ रहा है. सो वाई डोंट यू डू सम ट्रेनिंग्स एंड वाई डोंट यू डू सम एक्सरसाइजेज ड्यूरिंग the unproductive hours and also and so forth. This is a clear reflection that काम नहीं है कंपनी के पास because the clients are not giving enough work. That means काम अगर नहीं रहेगा, कोई कंपनी बैठा बैठा का किसी को सैलरी नहीं देगी. They will at first they will target the employees by laying them off. So that's the another indicator. Number 6 point, suddenly you will hear that some of the leadership team members, मतलब कोई senior director, कोई director, suddenly they have announced their exit, कि such and such person is leaving and all these things. They will make this in a very normalized manner, but you will see कि बहुत tenured senior directors और leaders है जो suddenly they are moving out. So that means कुछ ना कुछ दाल में काला है, and this is going towards the layoff initiative again. Okay. Number 7 points. Too much emphasis in terms of hand holding the junior employees by transferring your work to others. Means your manager or your senior leaders or your team leaders will ask you to handhold the junior employees who is sitting on in a lesser package and give them training in terms of what you are doing. At first they will give a justification that you should not create a dependency amongst the team, hence we are cross training you, and this is the indication that our team is growing and there will be no sense of dependency, you can take leads. And होता है कभी कभार सच भी है और 60% ये झूठ भी है. दैट मीन्स आपका काम उठा के जूनियर एम्प्लॉयज़ को ये लोग देने का प्लान कर रहा है, एंड इवेंचुअली योर रोल एंड योर पोजीशन विल गेट रिडंडेंट. अगेन डिस्क्लेमर, बहुत सारे केसेस में ये जेन्युइन केस होता है कि कंपनी इज रियली ट्राइंग टू गेट रीड ऑफ द डिपेंडेंसी, बट अधिकतर केस में ये होता है कि the company is planning to give all the work to the junior employees in terms of the knowledge transfer, and eventually they will lay off your team or lay you off. That's the thing. So ये 7 चीज़ें हैं जिसको अगर आपको लगे कि ये 7 चीज़ें हो रहा है, that means your company is going towards a pretty bad shape and you need to prepare yourself for a certain layoff. इसके लिए आप बैठे मत रहना. what I'm saying is that get yourself mentally prepared that layoff will happen. And in the June we have seen so many people getting laid off from the major IT companies. Okay, 11% of the workforce, 10% of the workforce, 7% of the workforce getting laid off. Don't get surprised, but आगे क्या करना है इसके ऊपर मैं एक और वीडियो लेके आऊँगा, दैट हाउ टू प्रिपेयर योर सेल्फ इन टर्म्स ऑफ जॉब रेडीनेस व्हेन योर कंपनी इज प्लानिंग टू ले यू ऑफ. तो इसके ऊपर एक वीडियो होगा, नेक्स्ट वीक ये वीडियो आएगा. इफ़ पॉसिबल आई मेक दिस वीडियो फॉर इन दिस वीक. अगर नहीं होगा तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, ये मंडे को ही आएगा, बट बहुत हेल्पफुल रहेगा. एंड आई होप today's video has been helpful to you, and please share this video with your colleagues, friends, and as usual please let us know your comment, which will help us to make videos out of your choice, because I don't make videos out of bookish knowledge. These are all realistic videos I'm making. So please let us know आपको क्या और जानना है. Based on that I can make more videos. And thank you for watching Cubicle Talks with Avik, and I'll see you soon.